إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وأمري ثارا وعيشي قارا ورزقي دارا وولادي برارا واجعل لي عند قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. This one's bad. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واحشرنا معهم. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله وقوته. أقوم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله. بسم الله.
بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واحشرنا معهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله وقوته الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك وبنيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا غريب الغرباء السلطان علي بن موسى الرضا. عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك وعلى جد. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.
हेलो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। कत्ल यूं हुआ बेकस, फ़ख्र पंजतन मुस्लिम। हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। और जैसे हर तरफ से ही तुझ पे संग बरसे हो, है जैसे हर तरफ से ही तुझ पे संग बरसे हो, चूर चूर जख्मों से है, चूर चूर जख्मों से है तेरा बदन मुस्लिम। हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। और काट कर तेरे सर को जालिमों ने लटकाया है, काट कर तेरे सर को जालिमों ने लटकाया। तू वो चांद था जिसको है, तू वो चांद था जिसको लग गया गहन मुस्लिम। हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। और लाश को घसीटा है शहर भर की गलियों में, है लाश को घसीटा है शहर भर की गलियों में, तेरे हाथ पैरों में है, तेरे हाथ पैरों में बांध कर रसल मुस्लिम। हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। और रास्तों में कूफे के खून बह गया सारा है, रास्तों में कूफे के
सारा, तार तार था तेरा है, तार तार था तेरा, सारा पैरहन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। और करबला का दीबाचा अपने खून से लिख कर है, करबला का दीबाचा अपने खून से लिख कर हो गया शहीद आखिर है, हो गया शहीद आखिर, हक पे अव्वलन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। और हाय तेरी मैयत पर उस जगह पे रोता कौन, हाय तेरी मैयत पर उस जगह पे रोता कौन, जिस जगह न भाई था है, जिस जगह न भाई था और न बहन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। और खुद नज़ीर ने देखा तेरी इस शहादत को है, खुद नज़ीर ने देखा तेरी इस शहादत को, ये ज़मीन क्या रोई है, ये ज़मीन क्या रोई, रो पड़ा गगन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। कत्ल यूं हुआ बेकस फ़ख्र पंजतन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मैंने एक ख्वाब में ऐसे शरफ पाए हैं, मैंने एक ख्वाब में ऐसे भी शरफ पाए हैं,
मुझको मजलिस के लिए लोग बुला लाए हैं, मुझको मजलिस के लिए लोग बुला लाए हैं। ऐ कमर मुझसे ये फरमाते हैं 14 मासूम। ऐ कमर मुझसे ये फरमाते हैं 14 मासूम। हम तेरा मरसिया सुनने के लिए आए हैं। मैंने एक ख्वाब में सलाम के तो शार फिर से के चलो सलवात पड़ेगा मोहम्मद वाला। हुर की ऐसी न किसी और को तकदीर मिली, हुर की ऐसी न किसी और को तकदीर मिली, जिसको दोज़ख के एवज़ खुल्द की जागीर मिली, हुर की हाँ पंजे तन कर गए साबित जो अमल से अपने पंजे तन कर गए साबित जो अमल से अपने, उससे बेहतर कोई कुरआन की न तक़सीर मिली, उससे बेहतर कोई कुरआन की न तफ़सीर मिली, हुर की हाँ तीर क्यों मार दिया बच्चे को जालिम तूने, तीर क्यों मार
जालिम तूने हुरमुला कौन सी बेशेर की तकसीर मिली हुर की हाँ कोई एक बार मदीने में न पहचान सका कोई एक बार मदीने में न पहचान सका कैद से छूट के जब ज़ैनब दिलगीर मिली कैद से छूट के जब ज़ैनब दिलगीर मिली सब मिले छूट के जिंदा से सकीना के सिवा सब मिले छूट के जिंदा से सकीना के सिवा हाँ मगर फातिमा सुग़रा से न हम शीर मिली सब मिले छूट के जिंदा से सकीना के सिवा हाँ मगर फातिमा सुग़रा से न हम शेर मिली हुर की ऐसी फातिहा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मुस्लिम पर लाइनों की चढ़ाई है शहर से तो आप क़यामत गज़ब आई है शहर से और एक तने तन्हा से लड़ाई है शहर से दम लेने की फुर्सत नहीं पाई है शहर से दम लेने की फुर्सत नहीं पाई है शहर से मजलूम पर एक नरगाए अफवाजे जफा है या दायरे में नुक़्ते अनवारे खुदा है या दायरे में नुक़्ते अनवारे खुदा है ज़िलहिज की नवी अरफे का दिन कत्ल का सामान पर ईद ये हो आप होता हूँ मैं कुर्बान
शहजादों का और शाह का अल्लाह निगहबान। करता हूँ रुक़ैया की सिफारिश मगर इसार, करता हूँ रुक़ैया की सिफारिश मगर इसार। कुड़ कुड़ के मेरे गम में ना दम उसका निकल जाए। सदक़े में सकीना के रुक़ैया मेरी पल जा, सदक़े में सकीना के रुक़ैया मेरी पल जा। अल-क़िस्सा सहर को हुई आदा की चढ़ाई, तवा का मका घिर गया आफत नहीं आई। चिल्लाती थी तो आके दुहाई है दुहाई, क्यों करते हो हैदर के भतीजे से लड़ाई, क्यों करते हो हैदर के भतीजे से लड़ाई। क्यों लड़ने को सब आए हो, ये किससे लड़ा है। बेचारा मेरे उज्र में आखे से पड़ा है, बेचारा मेरे उज्र में आखे से पड़ा है। ये सुन के बरामद हुआ वो नायब शब्बीर, बादल की तरह छा गए सब जालिम बेपीर। हाथों में मिले, हाथों में तुली बर्छियां, चिल्लों से मिले तीर। पढ़ने लगी मजलूम पे शमशीर पे शमशीर, पढ़ने लगी मजलूम पे शमशीर पे शमशीर। दीवार पर अंबो था और बाम के ऊपर बलवा था जब मुस्लिम नाकाम के ऊपर, बलवा था जब मुस्लिम नाकाम के ऊपर। नागालबो दंदा पर लगा संग जफा का, खम हो गए और मुंह से लहू डाला कई बार। पर दबदबा ये था कि ना पास आते थे कुफार। आखिर को दगा किए पुकारे वो सितमगार, आखिर को दगा किए पुकारे वो सितमगार। फिर लड़ना जरा पूछ लो, भाई की खबर लो। वो नाका सवार आए काबे के इधर को, वो नाका सवार आता है काबे से इधर को। मुद्दत से सुना था न जो हाल शय वाला, ये सुनते ही बेसाख्ता तलवार को रोका। बस मुंह के फिराते ही अजल ने किया मुजरा। बर्छी तो कलेजे में थी, बर्छी में कलेजा, बर्छी तो कलेजे में थी, बर्छी में कलेजा, बर्छी तो कलेजे में थी, बर्छी में कलेजा। मुंह सुए नजफ करके कहा अपने चचा से, मजलूम भतीजे को तेरे मारा दगा से, मजलूम भतीजे को तेरे मारा दगा से। काबे से उसी रोज रवाना हुए थे शाह। मुस्लिम तो लबे गौर थे शब्बीर सरेरा। जिब्रील ने कूफे की जमीन से कहा नागा, या हक में खुदा है तो बुलंद, हुक्म खुदा है तो बुलंद। मुस्लिम शे मजलूम की तस्वीर को देखे, शबीर उन्हें देखे वो शबीर को देखे, शबीर उन्हें देखे वो शबीर को देखे। कूफे की तरफ शाह ने चेहरे को फिराया। सैदानियों ने महमिलों से पर्दा उठाया। अल्लाह ने मुस्लिम का जमाल उनको दिखाया, अल्लाह ने मुस्लिम का जमाल उनको दिखाया। बैठा हुआ तलवार के नीचे नजर आया, बैठा हुआ तलवार के नीचे नजर आया।
गुम थी निगाहों में सदा हाय अखी की, या फातिमा रोती थी मारून अली की, या फातिमा रोती थी मारून अली की। चेहरों पर तमाचे हर में शहने लगाए, मिलने के लिए हाथ रुकैया ने बढ़ाए, चिल्लाई के लो अम्मा वो बाबा नजर आए। सब कहते थे बाबा ने वहाँ शहर बसाए, सब कहते थे बाबा ने वहाँ शहर बसाए। ने फर्श है ना साया दीवार के पीछे, बाबा तो मेरे बैठे तलवार के नीचे, बाबा तो मेरे बैठे तलवार के नीचे। क्या रोते हो लोगो मेरे बाबा को पुकारो, ले जाके रुकैया को पिदर पर कोई वारो, ज़ैनब पीयूष तर से मुझे जल्द उतारो, या हज़रत अब्बास हिमायत को सिधारो, या हज़रत अब्बास हिमायत को सिधारो। देती हूँ सकीना की कसम जाके बचा लो, बाबा को मेरे तेल के नीचे से उठा लो, बाबा को मेरे तेल के नीचे से उठा लो, बाबा को मेरे तेल के नीचे से उठा लो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। On behalf of the sponsors of tonight's Majlis, they've requested Surah Fatiha for Khanam Fakhri bint Agha Sikandar Khan and all Mu'mineen and Marumeen of the sponsors. Bismillah. Just a few announcements before I request Maulana to come to the minbar. A couple community house majlises tonight, inshallah. After the IEC program, there'll be a majlis at Dr. Askar's house. And tomorrow at 5 p.m., there is a majlis at Brother Arish Mustafa's house in Bartlett. If you need addresses to either one of those, please come find me or Shariar Bhai, and we can provide that information. Few IEC programs, upcoming programs in the next week or so. Tomorrow, inshallah, at 1 p.m., starting with Salat al-Zohran, there will be Amal Arafah. On Monday, inshallah, at 9 a.m., the first session for Salat al-Eid al-Adha. Saturday, June 22nd, starting at 3 p.m., will be the annual Ghadir Carnival. This is a family event. We request everyone to show up with their families. This is a great event to come and celebrate the crowning of our Mawla. So please come out with your families, inshallah. Then on Monday, June 24th, will be the Jashan for Eid al-Ghadir. And Tuesday, June 25th, will be Amal Eid al-Ghadir starting at 11:30 a.m. inshallah. Salawat par Muhammad wa alayhi. And I know I went through all these really fast. If you need any updates, IECHusaini.org has all the flyers and all the programs listed. And it's usually up to date, or you can also follow on the IEC WhatsApp group. If you're not part of that, you can go on the website and click the link. It will take you to the invite and put you in that group automatically, or you can come reach out to me anytime and I can add you to the group. With that, मैं मौलाना से गुजारिश करूँगा मेंबर पे तशरीफ़ लाएं और मजलिस से खिताब करें। सलवात।
Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. MashaAllah. Muhammad wa ali Muhammad wa ali. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran in Surah Al Imran ayat number 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. There should be a group of people among you who should invite others. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. They should invite towards khair, towards goodness. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. And they should enjoin the right, enjoin the good. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And forbid the evil. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. And they are the people who are prosper. So in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala praises the people and actually ordering the mu'mineen to do three things. There are three important things that has been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah. One, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. There should be people among you who invite people or call people towards haqq, towards right, towards khair, goodness. وَيَأْمُرُونَ. But the second thing is وَيَأْمُرُونَ, and they should enjoin, again, ma'ruf. What does ma'ruf mean? Goodness. So call people towards goodness and enjoy good. So what is the difference between these two sentences? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Apparently it looks the same thing, especially when you translate it. In Arabic there are two words have been used here. One khair and the other is ma'ruf.
But in translation, you say khair means goodness and ma'ruf means good. Enjoy it good. So what is the difference? Why apparently the same thing has been repeated 2 times? So actually Allah subhanahu wa ta'ala is saying that yad'una, to call people. Da'wah means calling people, inviting people to goodness, khair. Wa ya'murun, and enjoy it good. Enjoin means to at least have some more force than yad'una. In yad'una, just you invite someone. Ya'muruna, you order somebody to do good. See the difference? First, the difference between the verbs that have been used here. The verb, 2 verbs have been used. One, yad'una, one, ya'muruna. Yad'una, to call. Ya'muruna, to order, to enjoin. Don't do this, do this. Do this. When you say do this, and once you say, please, can you come here? Can you listen to this? Can you do this? So one is invitation, yad'una ila al-khair, to goodness, and the second one is ya'muruna, to order people to do good. What is the difference? Yes, there is a difference. Allah subhanahu wa ta'ala, when saying yad'una ila al-khair, invite people to khair, it means invite people towards Islam, towards good aqeedah, towards good faith. Inviting people to faith is first thing everyone should do. The second part is ya'muruna bil ma'ruf, to order or to enjoin good, means good character, good amal. So one is referring to aqeedah, your faith, and the second one is referring to your character. So it is not enough for you, as we discussed earlier in a day before in the Majlis, that our Aimma alayhimus salam have trained us to reach to higher level of Iman and Islam. It is not enough for us to be a Muslim and that's it. I'm Muslim, I'm a good person. I'm a mu'min, I believe in Ahlul Bayt. I'm so happy about it. No. If you are a mu'min, if you are a Muslim, being a Muslim is not enough for you until you share what goodness you have in your mind and your heart as a aqeedah, as a faith. Share it with other people, then you will become true Muslim. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Those people are prospered, those people are successful people. You will be a successful Muslim when you share what you have actually as a faith. Sharing your faith is called da'wah ila al-khair. That's why you hear the word da'wah nowadays. Da'wah it is actually tabligh. We also call it tabligh or da'wah, calling people towards Islam, towards good faith. It's called da'wah. For calling people, Allah did not use the word amr, to enjoin people to right aqeedah. No. To call people right aqeedah. Why? Because there is no compulsion in Islam. There is no compulsion in aqeedah. You have to just call them, just present true Islam to other people, and presenting is enough for you. You cannot force them. But in character, in salat, in other things, you can use little bit more emphasis. We can use the word emphasis. You can emphasize more. No, you have to pray. In prayers, you cannot say la ikraha fi din. La ikraha fi din, this sentence, la ikraha, there is no compulsion in Islam, does not apply in practicing Islam. I'll give you an example. It is not allowed to force someone to become a Muslim.
But it is good to force your friends, your family members, to some extent. Of course, force also has levels and grades. To force means to emphasize. Emphasize that they should pray. Why not praying? Should pray. Don't do this sin. It's wrong. Stop him. ينهون عن المنكر. ينهون عن المنكر. Forbid them from evil. Right? So but in accepting Islam, no. Just invite them. So example is this. That you might say, why even I should force somebody to adopt a good character? Why should I enforce Islamic values in my society, at my home, with my friends? Why? There should be no force at all. Not even emphasize. No emphasis. It should be just like you are inviting other people, the same you invite people to goodness among yourself. So the example is this. When you got your visa for United States, right? Did somebody force you to come to US? The people who migrated from back home, from there, and they came to this country, were they forced to come? Did somebody come to you and say, sorry, now you are going to US. I'm so sorry that you received your visa. Now you have to go. No. You were celebrating that. You were happy. Why? Because you were going to US, you're coming to this country with your own free will. Nobody forced you. Did someone? No one. Nobody forced you to come here. But once you enter this country, now you are forced to follow the rules and laws of this country. If you don't follow the rules and laws of the road, you will get the ticket. If the police gives you a ticket, you can tell him, hi, why are you giving me this ticket? That's because you were over speeding. So what? I'm free. I'm in a country with freedom. So I have my freedom here. So he will say, no. Since you were violated the rules and laws of the country, so that's why you are forced to follow the rules. Otherwise, you will get the ticket. And don't argue with him. Don't argue with him. Don't even ask him the reason. Why this? You gave me this ticket. What is the reason? He will give you the one-time reason. And if you ask him again, he will say, no reason anymore. I will gonna put you in prison. Reason? Prison. So you go to prison if you argue with him. Now, can you ask him that I heard that in US there is a freedom in US. There are, people are free. He will say, yes, people are free. First of all, you are free to come and enter in this country. Nobody forced you to come in this country. But once you entered, now you are forced to follow the rules and laws. The same thing about Islam. Nobody forced you to become a Muslim. But once you become a Muslim, you have to follow the rules and laws of Islam. It is exactly what Quran is saying. مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Once Allah and Rasul has decided anything for you, now you have no choice but to accept it. But who? Not non-Muslims. Allah has decided something, so people, all of you have to accept it. No. مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Somebody who claims to become a mu'min, I'm a mu'min, I'm a mu'mina.
If you're mu'min and mu'mina, then whatever Allah and Rasul decides, you have to accept it with no argument. Ma kana lahumul khiyara, then you will lose all your choices. No choice anymore. I can pray, I cannot pray. I want to pray the way I want. I want to fast the way I want. I want to do the things I like. No. ما كان لهم الخيار. Okay. So it means يدعون إلى الخير. In this ayah, referring to inviting other people to right path, and right path is Islam. So khair is what? Khair is Islam. And the other day in my Urdu Majlis, I was talking about khair, and I said khair is Islam, khair is your faith, khair is your aqidah. That's why when you stand up in front of a mayyit for salatul mayyit, what you say? Allahumma inna la na'lamu minhu illa khaira. Ya Allah, I don't know about him except khair. What do you mean by khair? You don't know anything about him? Anything wrong? No, you know so many things wrong he has done in front of you, but still when you stand up in front of the janazah, you say, oh Allah, I don't know about him but goodness. So are you lying there? No. Actually you are referring to his aqidah. Ya Allah, I don't know about him except good aqidah, good faith. He had faith in Islam, he had faith in Allah, he had faith in Rasulullah, he had faith in Ahlul Bayt. That's why when you come here in this majlis, one of the benefits that you receive is that people, when you see you on this place, they know that you have good aqidah and you are on khair, so that they can come and read in your janazah and say, Allahumma inna la na'lamu minhu illa khaira. This is the benefits of Majlis Hussein ibn Ali. Salat Muhammad Ali Muhammad. Okay, so first thing is, we have to invite people to Islam, to good faith, but just invite, no force, not even emphasizing, just politely. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, with wisdom. Talk to them with wisdom and with good. Even if somehow an argument happens, argue with them billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Talk to them in the best way possible, the most polite way, and with wisdom and reasoning convey your message of what? Inviting people towards Islam. So this is first responsibility. Next is what? Ya'muruna bil ma'ruf. This is not about aqidah now. This is about character. Now this is not for non-Muslims. So first sentence, yad'una ila al-khair, for non-Muslims. The second sentence is for Muslims, for mu'mins, for our community, ourselves, within ourselves, our circle, our family, our friends. Ya'muruna bil ma'ruf. If you see somebody is not doing something which is wajib on him, enjoin the ma'ruf, the goodness to him, and say, please, brother, why are you not praying? Praying is wajib. You're supposed to pray, for example. Or other good things. You can enjoy good things all the time. Amr bil ma'ruf is wajib, just like salat is wajib. And even the kids know when they name the list of wajibat and furu'i deen, amr bil ma'ruf is part of it. Then nahy anil munkar. Stopping or forbidding from evil. If you see somebody is doing wrong, something haram, something which is not jaiz in Islam, something that Allah forbid, something that Quran is saying it is not allowed, and you see somebody is doing it, politely, in good way, and there are of course rules and laws about it. Follow those rules and laws and try to forbid the evil in your society, in your home, within the circle of your friends. Don't let your friends do something evil. Stop them.
If you see somebody is doing haram, say, brother, why are you doing this haram? This is not jaiz. Convince him, tell him that, see, you are a good Muslim. When you are a Muslim, Quran says this, and Ahlul Bayt are saying this, and you're doing something against Quran and Ahlul Bayt. Don't do it. What is this called? It's called Nahi Anil Munkar. So, 3 things. Inviting towards khair. Enjoining righteousness. Forbidding from evil. Now I'm asking you. There's a question. Let me see. Answer this question by yourself in your mind. Say one salawat. Tell me why there are 3 things, why not 4? When amr bil ma'roof means enjoining right or good. And against this is what? Stopping or forbidding from evil. You have to do both things. 2 tells a brother, this is wajib, do it. This is 1. The second thing you do, if you see somebody is doing haram, say, please don't do this haram. Why not the same thing about the first thing? In Aqidah. Why Allah did not say, okay, invite people towards khair and stop them and forbid them from shar? Did you get the question? Why is not that? Why Allah is not saying, invite people to khair and stop them from shar, as He did about your character. Invite them to goodness and stop them from bad and evil. Why not there? So, because the first one is about Aqidah. You are responsible to present your Aqidah, good faith to other people. You are not responsible to stop people from their Aqaid. Going and stopping everybody, oh, you are doing this is wrong, this your Aqidah is wrong. You don't have to go and tell people that your faith is wrong. You are just only responsible for yourself, and come and tell them that what I have something good, I'm inviting you to this. You can invite, but you cannot stop. But in character about issues, following Islam, following the rules and laws of Islam, you will enjoin and you will forbid. Both are here. Salat Muhammad wa alim. So if you want to be successful in your life as a mu'min, not just as a regular man, regular person, no, as a mu'min, as a believer, you need to do what? يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Call people, invite people to your good aqidah. Then among yourself, do the amr bil ma'roof and do the nahi anil munkar. Correct? So this is what we have said so far. Now, why we are here today, this night? What was the purpose of Imam Hussein's uprising? Why did he send Muslim ibn Aqil to Kufa? What was the purpose? So everybody might, give his own research. This may be the purpose. This you don't have to say any. You don't have to tell us. Let's ask Imam Hussein, what did he stood up against Yazid? His stance against Yazid, what was the purpose? What was the goal? So Imam Hussein, he himself is saying that إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما actually I stood up لطلب الإصلاح في أمة جدي, so that I can reform
the nation of my grandfather. So see, the purpose he is mentioning, subhanallah. This is Karbala. Brothers and sisters, compare what Imam Hussein is saying to Quran. Put both ayat and hadith together, and you find how they are matching to each other. See, أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. I am standing up against Yazid for this purpose. What? Number one, to make reform in Ummat Jaddi. One. Then, أريد أن أمر المعروف. I do أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر, and do نهي عن المنكر. Three, the same thing as Quran is ordering us. يدعون إلى الخير, reform in the Ummah of Muhammad. يأمرون بالمعروف, أريد أن أأمر بالمعروف. وينهون عن المنكر وأنهى عن المنكر. Exactly the same as Quran said. Imam Hussein is repeating it as his purpose, as his goal for his uprising against Yazid. And subhanallah, see this point, see this nukta. Always when you hear an alim or a speaker speaking, your mind should move with his words, and you reach to some conclusions. Now there is a debate. Maybe there could be a debate, I should say. There could be a debate. Some people might ask, who won the war? Who was successful in Karbala, Yazid or Hussein? You as a follower of Imam Hussein, you will say Imam Hussein was the winner. He won the war. He was successful. Maybe somebody who had Yazidi mentality said, no, Yazid won the war. So if he is a Muslim, he cannot say that. Why? Because what Quran is saying, in the end of this ayat, Surah Ali Imran, ayat number 104, the conclusion of this ayah, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. See, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Those who do these three things, they are the people who are really successful. So Quran is announcing the success of Imam Hussein alayhi salam in Karbala. Salat Muhammad wa Ali Muhammad. Murdabad. So who was the successful? Who succeeded? Hussein ibn Ali. Tell me who did all these things? Yad'una ila al-khair. Who was calling people towards khair? Who was doing amr bil ma'roof nahy anil munkar? Hussein or Yazid? Hussein. When Hussein was doing, ulaika humul muflihun. And now his followers should continue his mission of Imam Hussein, as Janab Zainab did, as Imam Zainul Abidin did. We should continue that mission. And see, the youth were part of Imam Hussein's mission, and the success, actually, the credit goes to all those who were part of the mission of Imam Hussein alayhi salam. See the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam. He sacrificed everything in order to do what Quran wanted him to do. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. So this is for my youth, and this is my last words in English part. And I will go to Urdu very short, inshallah, and go to Masail.
So what we should learn, what we learn from such majalis, and especially see, Muslim ibn Aqil, he also was young. He was not very old. His age, most of the historians are on the opinion that he was 28-year-old. Some say that he was older than 20 years, but not very old. He was younger than Abu al-Fadl Abbas. And he was not alone, he took his 2 children with him. See, for what? Why? So he happily, wholeheartedly offering this sacrifice for what? To amr, for yad'una ila al-khair, for da'wah, to call people towards right. Whenever in the history, until the day of judgment, people will listen or hear or read about Muslim ibn Aqil, they will get the message. This message, what? That Hussein is right, Hussein is haqq. Hussein is haqq. Who said it the first time? Muslim ibn Aqil. With his blood, he wrote with his blood that Hussein is right. He wrote with the blood of his children that Hussein is right. This was Muslim ibn Aqil. Now, he was not a ma'soom, he was not an imam. Was he? No. He was a brother of Imam Hussein alayhi salam. I would say I'm just going to finish soon. If you read the Ziyarat, I wanted to say it in Urdu, but let me say it in English for our youth so they understand the status of Muslim ibn Aqil. Brothers and sisters and my children, you are in this country not for money, not for just worldly gains. Your purpose to come here should be even higher, very high. Reform. He said reform in the society. This was the purpose of Imam Hussein alayhi salam. You should do something with your character to make reforms. Make this society where you are living a best human society. Your contributions should remain forever in this country. And you should contribute goodness and righteousness and the faith that you have, true Islam of Ahlul Bayt, not Islam of Bani Umayyah that people know, unfortunately. Not the Islam of those terrorists that people know. Islam of Ahlul Bayt, Islam of Rasul, Islam of Allah in Quran, that deen. You have it. Don't keep it with you. Share it. And no matter what, don't say, oh, it's very hard. It is very hard, how can I do it? Hard? Is it harder than what it was for Muslim ibn Aqil? Tell me. Is it harder for him? For you? You are the follower of Hussein. Karbala is a mission. Karbala is not just an event that happened and you coming and sitting and talking about it and leaving and going home back. No, Karbala is a mission. Karbala is a message, an alive message. Always it will remain alive and keep you alive. This is the mission. So what I want to say in the end of my speech, and I'll go and read the Masa'ib in Urdu so that it will not be unfair for the crowd. See, when you read the Ziyarat Muslim ibn Aqil, just see the status of Muslim ibn Aqil. How great this person was. Again, he was not ma'soom. He was not an imam. Yes, he was a brother of an imam. He was the cousin of an imam. When you read the Ziyarat of Muslim ibn Aqil, what you say?
And even before I said the ziyarat, see how Imam Hussein alayhi salam selected him as his ambassador, as his safir, as his representative. Don't take this easy. It's something big. It's something amazing. You know, even in Kufa, there were very great personalities in Kufa. Great people like Habib ibn Mudahir. Come on. You know who was Habib ibn Mudahir? Imam Hussein's so close friend. A person that Imam Hussein called him faqih. Faqih. Who is calling him faqih? Not us, not you, not other fuqaha, not mujtahideen calling somebody faqih. No. Ma'soom is calling someone faqih. Was Habib ibn Mudahir, Muslim ibn Aqil. A good number of people, followers of Imam Hussein were there who deserved to represent Imam Hussein there in Kufa for him. But he is sending a younger person, Muslim ibn Aqil, there to be his representative. What do you mean by representative? You know what? Bay'at is not jaiz except on the hand of a ma'soom. Nobody can do bay'at except of a ma'soom. Muslim was taking the bay'ah. For him? No. For whom? For Hussein. Allahu Akbar. I don't have time to explain this. But let me give you, always I give you homework. Go and read Quran, and there are so many ayat about bay'ah in Quran. Quran says, Ya Rasulullah, O my Rasul, O my Prophet, when people come and do bay'ah on your hand, إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. These people are actually not doing your bay'ah. Their hand is not on your hand. Their hand is Allah's hand. Means they are paying the oath of allegiance not to you, Ya Rasulullah, when they are doing bay'ah. It's to Allah. Why? Because your hand today now is becoming Allah's hand. So big thing I'm saying. Allahu Akbar. So amazing. So Rasul, when he is taking bay'ah and somebody is doing his bay'ah, you know bay'ah, oath of allegiance, put their hand actually on the other way around. Rasulullah would place his hand like this and people do like this. Yadullah. Ya Rasul, your hand is Allah's hand. And they are doing the bay'ah to Allah. Why? Because you are doing bay'ah to you. In Ghadir, Rasulullah announced the do bay'ah of Ali. Why? Because bay'ah of Ali is bay'ah of Rasul. And bay'ah of Rasul is bay'ah of Allah. Now, after Ghadir, anybody who is doing bay'ah of Hassan, he is doing bay'ah of Ali. Bay'ah of Ali is bay'ah of Rasul. Bay'ah of Rasul, bay'ah of Allah. After Hassan, bay'at of Hussein is bay'at of Hassan and Ali and Rasul and Allah. Now Hussein is giving this responsibility to Muslim to extend his hand as hand of Hussein. Are you with me? Do you understand what I'm saying? That Imam Hussein gave the responsibility to Muslim to go to Kufa and extend his hand to seek the bay'ah of people for him. So this hand of Muslim was not hand of Muslim, it was hand of Hussein, and hand of Hussein was Yadullah. This was the selection of Hussein for Muslim ibn Aqil. This is the status of Muslim ibn Aqil. You know Abu al-Fadl Abbas, right? You know his status.
Who doesn't know among mu'mineen? Who does not know who was Abu al-Fadl Abbas? If you don't know Abu al-Fadl Abbas, you cannot know Hussein. Because Abbas is the gateway to learn about Hussein ibn Ali. Even today, when you go to Ziyarat of Karbala, although everybody says, I'm going to Ziyarat Hussein ibn Ali, I'm going to Ziyarat Hussein in Karbala. Nobody says, I'm going to Ziyarat Abbas. But when he reaches Karbala, he cannot go to Ziyarat Hussein unless he first goes to Ziyarat Abu al-Fadl Abbas. Why? Because Abbas is the gate, Abbas is the door to reach to Hussein. Abbas is, Allah subhanahu wa ta'ala has given him a great status, great. When you read the Ziyarat of Al-Fadl Abbas, what do you say? Assalamu alayka ayyuha al-abdu al-salih al-muti'u lillahi wa li rasulihi. Now, all the Zahirin who are sitting here, if you did not pay attention, if you did not notice what I'm saying, go and do it this time when you go inshallah to Karbala, when you go to Masjid Kufa, and there is a qabr of Muslim ibn Aqil. There is a qabr of Muslim ibn Aqil in that Masjid Kufa. This is Masjid Kufa. When you go, what you say when you say salam to Muslim ibn Aqil, do you know it? The ziyarat was taught by Imam al-Sadiq. Ziyarat of Abu al-Fadl Abbas, ziyarat of Muslim ibn Aqil both. Allahu Akbar, Allahu Akbar. When you read the ziyarat of Muslim ibn Aqil, you find the fact that as you are reading the ziyarat of Abu al-Fadl Abbas, almost same wording. When you stand up there in front of the Rih of Muslim ibn Aqil, you say the same thing. You say, Assalamu alayka ayyuha al-abdu al-salih al-muti'u lillahi wa li rasulihi wa lil Hasan wal Husayn. This is the Ziyarat what you read, Ziyarat of Muslim ibn Aqil. The sacrifice of Muslim ibn Aqil is very unique. Very unique. You know the word ghurbat is used in Urdu. Always you hear this word ghurbat. Apparently ghurbat, you know what ghurbat means? Hussein was gharib. Imam Rawa is gharib. Gharib not in Urdu meaning. In Arabic, gharib means a person who is alone, who remains alone, away from his hometown, away from his watan, from his hometown, he remained alone. The person who remains alone, with no friends, with no companions, with no supporters, he is standing alone, is called gharib. Hussein was gharib. But let me say this. If you want to see real gharib, come to Kufa and see how Muslim ibn Aqil is standing alone. Hussein was alone, but at least he had his brothers, his children, his sisters at least. But Muslim ibn Aqil was alone. All alone, all alone. This was ghurbat Muslim ibn Aqil. बस आजादारो चंद जुमले और जब मैं यहां तक पहुंचा, क्या अजमत है मुस्लिम की, अल्लाह खुदा की कसम, क्या मकाम दिया है अल्लाह ने इन दो भाइयों को, अब्बास को और मुस्लिम, इन दो भाइयों को बड़ा मकाम मिला है, बहुत अजमत मिली है। और ज़ारत दोनों की एक जैसी, बिल्कुल अल्फाज आप देखेंगे तो बड़े मिले जुले अल्फाज। कौन है मुस्लिम इब्न अकील? हुसैन का वो भाई जिसे हुसैन ने मुंतखब किया, मेरे भाई जाओ कूफे, जाकर कूफे वालों को इत्तला करो कि हुसैन आ रहे हैं।
कूफे वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनसे कह देना कि हाँ हुसैन आ रहे हैं। बैअत करना चाहें तो अपने हाथ पे बैअत ले लेना। बैअत ले ली है। मैं भी कह रहा था ना, गरीब, कभी एक इंसान देखे, हुसैन तो पहले ही से गरीब थे ना। वो जो गरीब हो जाए, हुसैन गरीब हुए नहीं, वो पहले ही से तन्हा थे। उनके पास वो 72 ही थे बस पहले ही से। मुस्लिम के साथ ऐसा नहीं हुआ। 18,000 कूफियों ने बैअत की थी। 18,000 कूफी मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। मुस्लिम गरीब हुए नहीं, चंद लम्हों में गरीब हो गए। नमाज तमाम की पीछे मुड़ के देखा, अकेला है मुस्लिम, तन्हा है मुस्लिम, कोई नहीं मुस्लिम के साथ, या गुर्बत है मुस्लिम है। कहां जाएं, कहां जाएं? एक ऐसे शहर में है जिसके रास्ते भी नहीं मालूम, उठ के चल पड़ते हैं तन्हा। ऐलान किया जा चुका है कि मुस्लिम को और उनके बच्चों को गिरफ्तार करके लाया जाए, उन्हें कत्ल किया जाएगा। पूरा शहर खून का प्यासा है, पूरा शहर खून का प्यासा। मुस्लिम चलते हैं। अब देखें मेरे दोस्तों, आप बहुत आसानी से या हुसैन कहते हैं ना यहां बैठ के। जब कभी मजलिस हो, माशाअल्लाह ये अच्छी बात है, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे और ये मोहब्बतें हमारी नस्लों में इंशाअल्लाह कायम रहें। आप जहां सुनते हैं कि मजलिस है कहीं, फौरन आप दौड़ के आते हैं, दिल तड़पता है, घर में बैठ नहीं पाते, जाएंगे मजलिस में जाएंगे, और ताबूत निकलने वाला, आप चले आते हैं बाहर, या हुसैन कह रहे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये दीन बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है, ये आजादारी बहुत दुश्वारी से हम तक पहुंची है। आप देखें कि जो हकीकी हुसैन के चाहने वाले थे, उन पर खुद क्या गुजरती थी कि जब मुस्लिम तन्हा निकलने लगे, कूफे की गलियों में जा रहे हैं अकेले, कोई नहीं है साथ देने वाला, रास्ता भी बताने वाला कोई नहीं, एक घर पे बैठ जाते हैं थक कर। आप भी तो आजादार हैं ना, आप भी तो चाहने वाले। इसी तरह कोई एक मोमिना थी, वो बाहर निकली, उसने कहा एक जवान सामने बैठा है, हालात सही नहीं शहर के, कौन हो तुम, क्यों यहां बैठे हो, उठो यहां से, चले जाओ, अपने घर जाओ। जैसे ये कहा तो मुस्लिम खड़े हो गए, उठ गए, उठ के चलने लगे। चलते चलते सिर्फ एक जुमला कहा कि अच्छा एक कनीज खुदा ये बता कि जिसका कोई घर ना हो वो कहां जाए। जिसका कोई घर ना हो वो कहां जाए। ये सुनना था कि एक मरतबा उसने कहा रुको, कौन हो तुम? कहा मैं मुसाफिर हूं। कहां के रहने वाले हो? कहा मदीने का रहने वाला। मदीने के रहने, मदीने का नाम सुना, चाहने वाली थी, उसको मालूम था मदीने वाले आ रहे हैं कूफे। मदीने में कहां के रहने वालों का? मोहल्ले बनी हाशिम का। बस तड़प गई, मोहल्ले बनी हाशिम, बनी हाशिम में तो मौला हुसैन रहते। कहा मैं उन्हीं का भाई हूं, मुझे मुस्लिम इब्न अकील कहते। बस जैसे ये सुना तड़प गई, हाथों को जोड़ा, कहा आका मेरे आका हो आप, मुस्लिम आप तो मेरे मौला हैं, आइए आइए मेरे घर में आइए, मेरा घर हाजिर है, तशरीफ लाइए। घर को खोल दिया, मुस्लिम सर झुकाए, अंदर तशरीफ लाए। उसने कहा मैं क्या खिदमत करूंगा? कुछ नहीं, एक मुसल्ला ले आओ, आज पूरी रात मुझे इबादत गुजारनी है। मैं हमेशा इस मजलिस में एक जुमला जरूर कहता हूं, और आप देख लीजिए, उसको कंपेयर कर लीजिए। ये जो मुस्लिम की शहादत है ना, ये करबला की शहादत का पेशखेमा, शहादत का मुकद्दमा है, दीबाचा है, खुलासा है। जो कुछ करबला में होने वाला है वो मुस्लिम पर यहां पहले ही गुजर रही है। शायद मुस्लिम को अंदाजा हो हुसैन भी शबे आशूर पूरी रात गुजारेंगे इबादत में, हमको भी इबादत में गुजारनी है। मुस्लिम सुबह तक इबादत में रहे, मुसल्ले पर बैठे रहे। मालूम था ना जो गुजरेगी हुसैन पर वो मुस्लिम पे गुजरनी है। सुबह हुई,
इब्न ज़ियाद को इत्तला हुई, उसने एक दस्ता भेजा, जाओ मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाओ। मुस्लिम को जैसे ही पता चला कि सिपाही बाहर खड़े हैं, फौरन बाहर निकलने लगे। एक मरतबा वो मोमिना हो तो हाथों को जोड़ के कहती, आका बाहर न जाएं, आप इसी घर में रहें, जब तक मैं जिंदा हूं आप पर आँच नहीं आने दूं। मुस्लिम ये कहते हुए निकले, मैं इसीलिए तो निकल रहा हूं कि मेरी गैरत ये तकाजा नहीं कर सकती कि ये जालिम एक ऐसे घर में आ जाए और किसी मोमिना की बेहुरमती हो जाए। मैं नहीं रुकूंगा, मैं बाहर निकल आऊंगा। ए मुस्लिम, एक मोमिना का इतना ख्याल, काश शाम गरीबा में होते और देखते बीबियों के सरों से चादरें छीनी जा रही है, सरों पर ताजियाने मारे जा रहे, नोक के अभी की नोक से छीनी जा रही है चादरें, बच्चों को तमाचे मारे जा रहे। बस अज़ादारो, बस चंद लम्हों की और जहमत है, ताबूत आप निकालेंगे एक गरीब का, एक गरीब उल वतन का जो तन्हा रह गया था। बस मुस्लिम बाहर निकलते हैं। जाहिर है अबू तालिब का खून बोल रहा था। आगे बढ़े, 500 का मजमा था, सबको जहर कर दिया तन्हा ने। उसके बाद फिर और मदद आई, फिर आखिर में सिर्फ धोखे ही से उनको एक गड्ढे में जनाब मुस्लिम गिर जाते हैं। अब देख लीजिए, बस मैंने एक जुमला कह दिया शुरू में, मसाइब के दौरान सिर्फ आप कंपेयर खुद करते चले जाएं, मिलाते चले जाएं मुस्लिम के हालात को हुसैन के हालात से। जब इस गड्ढे में गिरा दिया गया तो तारीख कहती है कि अब हर तरफ से घेर के लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। कोई पत्थर मारता था, कोई नेजा मारता था, कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था। अरे जो हुसैन का हाल था तनाई में, वही मुस्लिम का हाल था तनाई में। गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास लेकर आए, दाखिल हुए इब्न ज़ियाद के दरबार में। किसी ने कहा कि तूने सलाम नहीं किया अमीर को, तो आवाज दी, मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन के सिवा, मैं सिर्फ हुसैन को सलाम करता हूं। उसके बाद जख्मी हालत है, जख्मी कैफियत में सामने खड़े हुए हैं। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी पिला दे। पानी, भूखे भी होंगे लेकिन भूख की बात नहीं की, पानी की बात की। इसमें भी कोई मसलहत होगी। पानी लाया गया, लेकिन इतने जख्मों से चूर थे कि पानी में खून शामिल हो गया। वापस कर दिया। क्या फिर दोबारा पानी, 3 मरतबा ऐसा हुआ। कहा नहीं, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा, ये किसी को मालूम नहीं था। ये तो आशूर के दिन पता चला कि जब आका प्यासा जाएगा इस दुनिया से तो सफीर कैसे पानी पिए। बस अदादारो, अब हुक्म होता है, जाओ पुश्ते बाम पर ले जाकर मुस्लिम को कत्ल कर दो, सर जुदा कर दो जिस्म से, और जिसमें अथर को जमीन पे फेंक दो। कातिल लेके चलता है, जैसे ही पहुंचा पुश्ते बाम पर तलवार उसने निकाली, कत्ल करना चाहता है। मुस्लिम ने कहा अभी रुक जा, क्या चाहते हो? कहा 2 रकत नमाज पढ़ने दो। करबला है ना, करबला बन रही है, ये करबला का मुकद्दमा है। नमाज पढ़ी है, नमाज। जैसे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के उठे, तलवार लेके फिर आगे बढ़ता है जल्लाद, फिर रोक देते हैं। कहा अब क्यों रोक रहा हो? और नमाज पढ़ोगे? नमाज तो पढ़ चुका, मगर नमाज अभी मुकम्मल नहीं हुई। अब क्या चाहते हो? कहा मुझे इतनी इजाजत दे दो, मैं अपने हुसैन को सलाम कर लूं। उस रास्ते का रुख किया जो मदीने से कूफे की तरफ आता है। आवाज दिया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जैसे कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन इब्न अली खेमे के सामने
कुर्सी पर तशरीफ फरमाते खड़े हो गए, खड़े होकर आवाज दी, वालेकुम या अखी, मेरे भाई तुम पर भी मेरा सलाम। ज़ैनब बाहर निकल के आई, ए भैया मुस्लिम को सलाम कर रहे हो क्या? मेरा भाई मुस्लिम आ गया। कहा ज़ैनब क्या तुम देखना चाहती हो मुस्लिम किस हाल में है? मुस्लिम तलवार के नीचे बैठा है। बस एक मरतबा अब्बास ने आवाज सुनी, आगे बढ़े, कहा मौला मुझे भी दिखा दे। अब्बास ने क्या देखा? तलवार चल रही है, सर कलम हो रहा है, तरफ गए, मौला मुझे इजाजत दीजिए मैं कूफे पहुंच जाऊं अपने भाई को बचाने के लिए। कहा अब्बास जाकर क्या करोगे? जाकर क्या करोगे? कहा मौला सर तो तन से जुदा हो चुका है, कम से कम ये जो तन को इस बुलंदी से जमीन पे डाला जा रहा है जाके आगोश में ले लूंगा। कहा अब्बास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुमने ऊपर तो देखा नीचे नहीं देखा, जरा देखो तो सही, रसूल कायनात आ गए हैं, अली आ गए, मेरा भैया हसन आ गया है, अरे मेरी माँ भी आ गई है, वाह हुसैना, वाह। कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, फिरते हैं एक लाश सितमगर लिए हुए, फिरते हैं एक लाश सितमगर लिए हुए, कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, फिरते हैं एक लाश सितम कर लिए हुए, गुर्बत में सर कलम किया इब्ने अकील का, गुर्बत में सर कलम किया इब्ने अकील का, अब फिर रहे हैं लाशाए बेसर लिए हुए, अब फिर रहे हैं लाशाए बेसर लिए हुए, कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, फिरते हैं एक लाश सितम कर लिए हुए, कूफे के दर पर फर्ख को लटका दिया है जब, कूफे के दर पर फर्ख को लटका दिया है जब, क्यों फिर रहे हैं लाश को दर दर लिए हुए, क्यों फिर रहे हैं लाश को दर दर लिए हुए, कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, फिरते हैं एक लाश सितम कर लिए हुए, तशहीर हो रही है ये बेकस के कत्ल की, तशहीर हो रही है ये बेकस के कत्ल की, फिरते हैं लाशें मुस्लिम बेपर लिए हुए, फिरते हैं लाशें मुस्लिम बेपर लिए हुए, कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, कूफा है हश्र का मंजर लिए हुए, फिरते एक लाश सितमगर लिए हुए, फिरते एक लाश सितमगर लिए हुए, गुर्बत में सर कलम किया इब्ने अकील का,
गुर्बत में सर कलम किया इब्न अकील का, अब फिर रहे लाशे बेसर लिए हुए, अब फिर रहे लाशे बेसर लिए हुए, कुफा एक अशर का मंजर लिए हुए, कुफा एक अशर का मंजर लिए हुए, फिर एक लाश सितमगर लिए हुए, कुफे एक लाश सितमगर लिए हुए, कूफे के दर पर फर्क को लटका दिया है जब, कूफे के दर पर फर्क को लटका दिया है जब, क्यों फिर रहे लाश को दर दर लिए हुए, क्यों फिर रहे लाश को दर दर लिए हुए, कुफा एक अशर का मंजर लिए हुए, कुफा एक अशर का मंजर लिए हुए, फिरते एक लाश सितमगर लिए हुए, फिरते एक लाश सितमगर लिए हुए। या हुसैन 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 या हुसैन। अज़मात लिए है खुल्द की दामन करबला, अज़मात लिए है खुल्द की दामन करबला, तूने शहीद हक़ से बड़ी शान करबला, अज़मात की दामन करबला, अंदाज कह रहे थे ये ज़ैनब के लाल के, अंदाज कह रहे थे ये ज़ैनब के लाल के, जाने न देंगे हाथ से मैदान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामन करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामन करबला, हैदर का लाल गैज़ में आया है नहर पर, हैदर का लाल गैज़ में आया है नहर पर, छलके आज खून से मैदान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामन करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामन करबला, इस्लाम की रगों में रवा है तेरा लहू, इस्लाम की रगों में रवा है तेरा लहू, ऐ बेज़बान आज़रे नादान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामन करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामन करबला, उठो लबे फुरात से अब्बास से बावफा, उठो लबे फुरात से अब्बास से बावफा, तन्हा गिरे हैं फौज में सुल्तान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामन करबला, अज़मात ये खुल्द की दामन करबला, हंस कर गला बढ़ा दिया नावा के सामने, गला बढ़ा दिया नावा के सामने, देखे ज़माना ज़रूरते नादान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामन करबला,
अज़मात लिए है खुल्द की दामान करबला, अज़मात लिए है खुल्द की दामान करबला। ज़ैनब तलाया करती थी खैमे का जिस घड़ी, ज़ैनब तलाया करती थी खैमे का जिस घड़ी, रोता था बेकसी पे बयान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामान करबला। ज़ैनब तड़पती रह गई अल्लाह रे बेकसी, ज़ैनब तड़पती रह गई अल्लाह रे बेकसी, प्यासा शहीद हो गया सुल्तान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामान करबला। देकर शिकस्त मकसद बातिल को शाम से, देकर शिकस्त मकसद बातिल को शाम से, आए हैं करबला में असीरान करबला, अज़मात ये है खुल्द की दामान करबला, अज़मात ये खुल्द की दामान करबला। शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शब्बीर शब्ब सलाम, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, आन मोहम्मद सलाम, शाह सलाम अलैक, आबिद असगर सलाम, शाह सलाम अलैक, ज़ैनब कुलसुम सलाम, शाह सलाम अलैक, हुर्र दिलावर सलाम, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, यासी सकीना सलाम, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शियों के मौला सलाम, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक, शाह सलाम अलैक।
फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने हाय गलियां विच फिराया मुस्लिम
गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया खुशियां ने अज मनाने बच्चे आनू मार के ईद ने मनाने गले आनू मार के लोकां ने नबी दी इंज आनू मुकाया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया खुशियां ने अज मनाने बच्चे आनू मार के ईद ने मनाने गले आनू मार के लोकां ने नबी दी इंज आनू मुकाया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया रल के खूफिया ने दिन ईद दा मनाया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया कुर्बानी इंज ने कीते बच्चे हुसैन दे मारे ने जिगर गोशे गाजी दी बैन दे सीने सिर नूं देखो गरीबन को लाया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया रल के खूफिया ने दिन ईद दा मनाया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया मुस्लिम दी लाश नूं लोकां ने गलियां विच फिराया
मनाया मुस्लिम की लाश
बंधा है
डूबा हुआ है, सरदारी का नामार की गर्दन से बंधा है, सरदारी का नामार की गर्दन से बंधा है, सरदारी का नामार की गर्दन से बंधा है। बनी हाशिम का कमर डूबा हुआ है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है, लड़ने की इजाजत नहीं ये सोच के राजी, लड़ने की इजाजत नहीं ये सोच के राजी, मैदान में लड़ने की तमन्ना से लड़ा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है। लड़ने की इजाजत नहीं ये सोच के बाजी, लड़ने की इजाजत नहीं ये सोच के बाजी, मैदान में लड़ने की तमन्ना से लड़ा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है। बनी हाशिम का कमर डूबा हुआ है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है, सरदारी का रहमान गर्दन से बंधा है। दरिया की तरफ देख के कहती थी सकीना, दरिया की तरफ
दीवार
सरगाजी का रहवार की गर्दन से बंधा है, सरगाजी का रहवार की गर्दन से बंधा है, सरगाजी का रहवार की गर्दन से बंधा है, लड़ने की इजाजत नहीं है।
मतवज्जा ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या खातिमल अंबिया, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या मौलाई या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अल मज़लूम अश-शहीद अल गरीब, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरल मोमिनीन अलिय्यन वलियुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या शहीद बकरबला रूही व जिस्मी लकल फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या अलमदार हुसैनी या सकाए सकीना या बाबुल आवाज व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब बिन्त अली या मुसाफिर शाम या उम्मुल मसाइब व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सश शमूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस या सुल्तान अल अरब वल अजम या अली इब्न मूसी अर्रिज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र
والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا باب الإيمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. دعاء إمام زمان عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. बेशुमार बेशुमार बेशुमार। हज़रात, आप सबसे गुजारिश है, कल एक मजलिस मुनक्किद की जा रही है आरिश मुस्तफ़ा भाई के घर पे। हो सकता है आप सबके पास इसका फ्लायर पहुंच चुका हो। और मोहम्मद अली रज़ा और आरिश मुस्तफ़ा इस मजलिस का हर साल आमाल अराफात के फ़ौरन बाद इनक़ाद करते हैं बार्टलेट में। इनका एड्रेस किसी को भी चाहिए हो वो इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, या मोहम्मद अली रज़ा या आरिश से। आप सबसे गुजारिश के इस मजलिस में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत।